Assalamualaikum viewers. Today we will discuss physical and chemical changes. As we see in our surroundings, there are various changes which are temporary and some are permanent that occur in our surroundings. What is a physical change? Physical change is a temporary change. The changes in which the new substance is formed, but there are the identity of that substance remains same. Those changes in which new substance is formed in the physical change, the substance involved do not change their identity. They can be easily returned, and these are reversible changes. These can be reversed to their original form by some physical process. This means that physical change can be easily reversed. The change in physical state, size and shape of the substance are physical changes. There will be shape change, size change, but that are the physical changes, that are the temporary changes that can be returned back, that can be reversed. Here are the examples. For example, as we see melting of ice. On heating, the ice will melt, that will form water, and on freezing, that water will become also ice. But this is a temporary change. Although there will be change in size, shape, but the water, there will be no chemical change. As the water as ice, this is water as water, this is also water, or as स्टीम, दिस इज ऑल फ्रीजिंग ऑफ वाटर. हाँ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर की हम बात करें तो फिर आइस बनता है, फ्रीज होता है, वाटर को फ्रीज किया तो आइस बन गया, तो आइस को गर्म किया, हीट किया तो फिर वाटर बन गया. यहाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइल्स चेंजेस इनटू वेपर्स, एंड वेपर्स कैन बी returned back into water by cooling, condensation of steam. The steam will be condensed when we cool. Condensation of steam, that will change into water again. So these are the temporary changes that can be returned back, that can be reversed. And number two is chemical changes. Chemical changes are that are permanent changes. Once they took place, they cannot be returned to its original position. Those changes in which new substance with new properties is formed. Their properties change in a chemical change. The properties of the substance changes. The substance involved change their identity. तो identity भी change होती है. जो दूसरी substance बनती है तो उसकी जो जिसका बना होता है तो उसकी उसमें प्रॉपर्टीज नहीं रहती, बल्कि नई प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं. गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरली न्यू सबस्टेंस. तो एक नया सबस्टेंस बनता है. द न्यू सबस्टेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. वो जो नई सबस्टेंस बन गई तो फिर हम चाहें कि इसको वापस लाएं अपनी सूरत में, तो नहीं कर सकते हैं. फिजिकली हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. दिस मीन्स देयर केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल, एंड दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, अगर हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम करेंगे तो मैग्नीशियम वायर, तो फिर वो वायर नहीं बन सकती है. या बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ को जलाया तो उस राख को फिर हम पेपर नहीं बना सकते. या रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगता है आयरन को, वो खा जाता है आयरन को. तो कुकिंग ऑफ फूड को कुक किया, चावल को कुक किया तो वो बन गया. तो हम उस राइस को फिर वो नहीं बना सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो फिर चावल नहीं बनेगा. तो कुकिंग ऑफ फूड इज दिस ए परमानेंट चेंज. दिस इज ऑल्सो ए केमिकल change. And there are so many chemical changes which took place in our surroundings. And here we will discuss the difference between physical change and chemical change. As we know, no new substance is formed with new properties. Substance is formed, but not new with new properties. In this, new substance with new properties is formed. In chemical change, new substance with new properties is formed. इस तरह है. टेम्परेरी चेंज है, रिवर्सिबल है, इसको हम वापस ला सकते हैं अपनी सूरत में.
तो अगर हम ये परमानेंट चेंज है, फिर रिवर्स नहीं हो सकता है, इसको अपनी सूरत में हम नहीं ला सकते हैं. दिस इज रिवर्सेबल एंड दिस इज इरिवर्सेबल. और एक वेरी लिटल हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन फिजिकल चेंज में थोड़ा हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है, या ये ड्यूरिंग दिस चेंज नो लिटल हीट इज एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड ड्यूरिंग. बट जब केमिकल चेंज होती है इसमें लॉट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या इसमें और ये देती है लॉट ऑफ एनर्जी, या ये एब्जॉर्ब भी करती है इन केमिकल चेंज में. द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन फिजिकल चेंज. तो मास वही रहता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन द फिजिकल चेंज, but in chemical change the mass will change. The mass of the substance alternates in a chemical. These are some differences which we here discussed about the physical change and chemical change. So we conclude that physical change is a temporary change, it is reversible change, and no new substance with new properties is formed, and but the chemical change is a permanent change. New substance with new properties is formed. It is irreversible. Here the lot of energy is absorbed or evolved, and here physical change में तो mass of substance does not, जो नई चीज़ बनती है तो उसका mass सेम रहता है जिसका वो बना होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल mass भी चेंज होता है और प्रॉपर्टी भी चेंज होती है इन फिजिकल चेंज में.